Okay, so we were doing theories of different scientists on evolution, and we were doing Darwinism. So Darwin theory was actually natural selection, and he was influenced by Thomas Malthus. Malthusian theory, ठीक है? Malthusian theory यही बता रहा था. The population remained nearly stable in size except during some seasonal fluctuation. Though stable in size होता है population, Malthus theory बता रहा था, except seasonal fluctuation. ठीक है, seasonal fluctuation. But the fact that even after full probabilities of population to grow exponentially, they do not grow so. The population sizes in reality are limited. Malthus interpreted that if the population sizes are limited, then there had been competition or struggle for acquiring the resources among individuals of the same species or two different species. The one who had better adaptability survived and produced more progeny. The concept of fitness and natural selection was thus reflected in his theories. The main points of Darwin's theory of natural selection were as follows. Main parts of Darwin's theory of natural selection were as follows. High rate of reproduction, resources limited, struggle for existence, variations, survival of fittest, natural selection. Main parts of Darwin theory were these. All successful organisms have biotic potential or reproductive rate. All successful organisms have a biotic potential. Important term है. Biotic potential is an important term. Biotic potential यही reproductive rate को ही कहते हैं और कुछ नहीं है. Biotic potential और reproductive rate. The organisms produce a large number of offspring that may possibly survive. Example, a mice produces a dozen mice at one time. ठीक है. A rabbit produces 6 young ones at a litter produces, and there are 4 litters in a year. ठीक है. And a rabbit starts reproducing at the 6 months. But not only some individuals will survive which are adult, but also the different rates. This is called differential reproduction. Number 1 देके लिखा. Not all, but only some individuals survive. Only some individuals survive, comma, reach adulthood. And those which reach adulthood reproduce at different rate. Produce at different rates. This is called as differential reproduction. Differential reproduction. Not all, but only some individuals which survive reach adulthood, and those which reach adulthood reproduce at different rates.
Not all, but only some individuals will survive, reach adulthood, and those which reach adulthood reproduce at different rates. This is called differential reproduction. The success in survival and reproduction depends upon the characteristic traits of an organism. Example, only those success in survival and reproduction depends upon the characteristic traits of an organism. Depends upon the characteristic traits of an organism. Example, only those rabbits will survive better who evade their predator. This is there is there is struggle for existence, and is there in there will be struggle survival of fittest. This is struggle for existence. Struggle for existence, ठीक है, and in this there will be survival of fittest, और इस struggle में fittest का survival होगा, and in this comma will be survival of fittest. इसी में इस struggle में ही survival of fittest होगा. अच्छा ठीक, survival of fittest समझा? हाँ, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है. अब आगे द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज यूज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर. हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है. द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्पेंसर. स्पेंसर भाई का नाम पूरे चैप्टर में सिर्फ यहीं पे और कहीं भी नहीं है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, तो याद रख लो इसको. हर्बर्ट स्पेंसर. स्पेंसर तो कपड़ा का वो है कंपनी, सेंट्रल मॉल में. The name context was asserted by Darwin as the same context was natural selection. The same context, इसी चीज को ही, ठीक है, कंटेक्स्ट में समझ आना, was asserted by Darwin as. डार्विन इसी चीज को बोला, क्या, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को बोला नेचुरल सिलेक्शन. नेचर सेलेक्ट करता है फिटेस्ट को, मतलब वही सेम चीज़ है. अब दोनों एकदम एनालोगस मतलब है, तो दोनों कंसेप्ट, ठीक है. सो इवोल्यूशन इज द चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय नेचुरल सिलेक्शन विच एक्ट्स अपॉन द वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो इवोल्यूशन का डेफिनेशन दे रखा है यहाँ पे, लिख लो, काम देगा. इवोल्यूशन इज चेंज इन द genetic composition of the population which is brought about by the natural selection, which acts upon variability in population. मतलब ये जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज है पॉपुलेशन का, जो कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण आया है, और ये विच एक्ट्स अपॉन दी वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन. ठीक है. Weakness of Darwinism. He was not able to explain the cause of discontinuous variation observed by himself in the nature and mode of transmission of variations to next generation. मतलब ये डिसकंटिन्यूएशन जो है, कभी कभार आ रहा है, कभी कभार नहीं आ रहा है,
वेरिएशन, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए रीज़न, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थ्योरी ऑफ वो कौन दिया था, थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस है ये तो नीचे दिया हुआ, और उधर क्या था, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ना, क्या था, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म दिया था ऑगस्ट वेसमैन। थ्योरी ऑफ क्या दिया था, हाँ थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, सही बोला मैं। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया था, ऑगस्ट वेसमैन ने। ठीक है, वेसमैन ने दिया था। वीकनेस ऑफ डार्विनिज्म, तो लिखो वीकनेस ऑफ डार्विनिज्म। Weakness of Darwinism. He wasn't able to explain. He wasn't able to explain the cause of discontinuous variations observed by himself in nature and the mode of transmission of variants to next generation, and the mode of transmission of variants to the next generation, to the next generations, variants to the next generation. अच्छा, in 1868, 1868, Darwin put forward Darwin put forward the theory of pangenesis. Darwin put forward the theory of pangenesis. According to this theory, every organ of the body produces minute hereditary particles called pangenes or gemmules. According to this theory, every organ of the body produces minute hereditary particles called as pangenes or gemmules. Pangenes or gemmules and they are carried through blood into gametes. Through blood into the gametes. Weismann's theory of germ plasm rejected Darwin's theory of pangenesis. Theory of germ plasm rejected Darwin's theory of pangenesis. Weismann's theory of germ plasm rejected Darwin's theory of pangenesis. ठीक है, विजमस थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म जो और उसको भी किया था, क्या कहते हैं, लमार्क के थ्योरी को भी किया था रेफ्यूट, इसको रिजेक्ट कर दिया डार्विन्स थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस। ये भी गलत है, पैंजेनेसिस भी गलत था। ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड दैट द germ
यानी सेक्स कॉमा cells are set apart from other body यानी somatic cells early in the embryonic development. early theory of germplasm बहुत important है. early in the embryonic development. So only the changes in the germplasm only the changes in the germplasm affected only the changes in the germplasm affect the characteristics of future generations. Only the changes in the germplasm affect the characteristics of future generations. डार्विन्स नोवेल्टी ये इंपॉर्टेंट है. डार्विन भाई साहब में मज़ेदार क्या था, ठीक है. डार्विन भाई साहब का मूल क्या था, मेन चीज़ क्या था, डार्विन्स नोवेल्टी, ठीक है. Darwin's novelty. It is a possibility that these above-mentioned ideas of Thomas Malthus inspired Charles Darwin to frame his own theory of evolution based on the natural selection. It is It is a possibility. It is a possibility that these above-mentioned ideas of Thomas Malthus inspired Charles Darwin to frame his own theory of evolution based on the natural selection. Based on the natural, he took part that they should part the charge of it to frame his own theory of evolution based on natural selection. However, he was a novelty in the concept of Darwin along with this. Darwin asserted that variations are heritable and which make resources utilization better for few will only able to. ठीक है. Darwin suggested that variation asserted या suggested जो भी है that variation which are heritable and which make resource utilization better for few. वेरिएशन जो कि हेरिटेबल है और जो कि मतलब मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेटर फॉर फ्यू. ठीक है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स बेटर फॉर फ्यू ये वाला वेरिएशन जो कुछ लोगों में बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन करता है विल इनेबल ये वेरिएशन will enable only these to reproduce and leave the more progeny. Only these to reproduce and leave more progeny.
Darwin suggested that the appearance of new life forms is due to accumulation of variation from one generation to another. Darwin suggested that appearance of new population of variations from one generation to another suggested that accumulation of new life forms is due to accumulation of variation from one generation to another. Accumulation of variation, यही न्यू लाइफ फॉर्म कैसे आता है, यही वेरिएशन जब बहुत ज़्यादा होते जाता है, यही सब वेरिएशन जब एक्यूमुलेट कर जाता है एक ऑर्गेनिज्म में एक से दूसरे जनरेशन से और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है ये सब वेरिएशन, तो नया ही लाइफ फॉर्म बन जाता है, नया ही स्पीसीज बन जाता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ठीक है. Darwin also talked about the rate or speed of appearance of new forms. He said that the appearance of new forms is linked to lifespan of that organism. For example, the microscopic microbes have shorter lifespan because they divide faster, become millions of individuals within hours. Hence, microbes have more chances to evolve faster. But if we talk about any other organism like fish or fowl, they will take millions of years to evolve because of their lifespans are much longer, that is in years, than the microbes. To explain, Darwin touched on two key points. To explain evolution, ये लिखना, ये बहुत important है. To explain evolution, Darwin stressed on two key points. Branching descent natural selection and branching descent and natural selection. Branching descent explains the pattern of evolution and selection explains the mechanism of evolution. तो देखो ऐसे ब्रांचिंग डिसेंट के पे एरो देके लिखो पैटर्न ऑफ इवो, बस इवो लिख दो. और नेचुरल सिलेक्शन के बाद एरो देके लिखो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. अच्छा, डिसेंट हो रहा है मतलब उसका जो है वो दिख रहा है नीचे आते वक्त वैसे वैसे, तो पैटर्न बता रहा है किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन बताता है. ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की पॉइंट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ये टू की पॉइंट्स है और डार्विनियन थ्योरी है. Branching descent, he said that evolution is a branching process. With time, new life forms appear, and these life forms appear as branches to appear. Hence, branching descent towards points toward concept of common ancestry. ठीक है. अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया ब्रांचिंग डिसेंट पॉइंट्स टूवर्ड, लिख दो ऐसे ही एक लाइन नीचे, ब्रांचिंग डिसेंट पॉइंट्स टूवर्ड द कंसेप्ट ऑफ common ancestry. Natural selection, he emphasized that the selection of useful variations by nature is the main mechanism for evolution to occur, which has already been discussed. He emphasized that selection of useful variations by nature is the main mechanism for evolution to occur, which has already been discussed. What were the key concepts of Lamarckism and Darwinian theory? Key concept of Lamarckism: use and disuse of organs, inheritance of acquired characters. Key concept of Darwinian theory, एक second. Key concept of Lamarckism: use and disuse of organs, inheritance of acquired character. Key concept of Darwinian theory अपना वही दो ठो, branching descent और natural selection. Give two examples of adaptive radiation. Darwin finches हो गया, Australian marsupial हो गया.
यही दो था अडेप्टिव रेडिएशन का। अब आ गया लास्टली म्यूटेशन थ्योरी। इतना फालतू चीज़ सब पढ़ के अब आएगा म्यूटेशन थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी, लामार्कियन थ्योरी और फिर म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी भी गलत हो गया लास्टली प्रूव, अपना ओवरस्टेड ह्यूगो डे व्रिस सॉरी म्यूटेशन थ्योरी। In 1901, Hugo de Vries proposed mutation theory on the basis of his observation on wild variety of on क्या है इवनिंग प्रिमरोज का नाम ओनियोथेरा लामार्किया। इवनिंग प्रिमरोज का नाम ओइनोथेरा लामार्कियाना, ठीक है, ओइनोथेरा लामार्कियाना। According to mutation theory, new species originate as a result of large discontinuous variation which appears suddenly. The main feature of mutation theory are as follows. Mutations arise from time to time amongst the individuals of a naturally breeding population. Mutations are heritable and establish new forms of species. Mutations are heritable and establish new forms or species. Mutations are heritable. लिखो सारा पॉइंट। Mutations arise from time to time, ठीक है, amongst individuals of a population, बस इतना लिख दो, of a population। म्यूटेशन टाइम टू टाइम आता जाता है इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन के। सेकंड पॉइंट, म्यूटेशन हेरिटेबल है। म्यूटेशन और हेरिटेबल, ये गलत मतलब हो गया बाद में, हेरिटेबल एंड एस्टेब्लिश न्यू फॉर्म एंड फॉर्म न्यू फॉर्म, ठीक है, न्यू फॉर्म्स और स्पीसीज। अच्छा, mutation are large and sudden are totally different from fluctuating variations of Darwin which are small and directional। अच्छा देखो, third, mutations are undirectional, large, single step, ठीक है। अब लास्टली क्या है, म्यूटेशन अकर इन एनी डायरेक्शन, भाई अनडायरेक्शनल लोग लिख चुके, तो अब लिखो causes of variation। Mutation is the ultimate source of variation at the next level is recombination, intermingling of two widely separated population। हाँ देखो, ये 3 पॉइंट बोला, causes of variation क्या क्या हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डब्बा है। causes of variations क्या है इसके हिसाब से, ह्यूगो डे व्रिस बाबू के हिसाब से क्या है। नंबर पहला है, सबसे पहला तो म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशन इज द अल्टीमेट, ऐसा ये बोले, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। सेकंड नंबर पे है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे है मिंगलिंग of two widely spread population। Neo-Darwinism, a modern version of Darwin theory which natural selection incorporating the findings of genetics and attributing mutation as the main cause of variation in the population। मतलब मॉडर्न वर्जन ऑफ डार्विन थ्योरी ही है, मगर उसका मॉडर्न वर्जन by natural selection incorporating the findings of genetics and attributing mutation as the main cause of variation in the population। न्यू डार्विनिज्म कुछ नहीं है, बस डार्विनिज्म है, उसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा है। पहला, नेचुरल सिलेक्शन को इनकॉर्पोरेट कर दिया फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक्स को, और दूसरा कि म्यूटेशन एज द मेन कॉज ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन।
तो लिखो न्यो डार्विनिज्म, न्यो डार्विनिज्म है ना, लिखो डार्विनियन थ्योरी, लिखो बस डार्विनियन थ्योरी और फिर लिख दो प्लस डार्विनियन थ्योरी प्लस नेचुरल सिलेक्शन incorporating the findings of genetics और फिर प्लस करके लिखो and attributing mutations as main cause of genetic variations, as main cause of variation। यही था न्यो डार्विनिज्म, खत्म। अब आगे क्वेश्चन। लार्ज लेग मसल बिल्ड अप एन एग्जांपल ऑफ अक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई देखो ये अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इनहेरिटेड तो नहीं होगा। ऑल मार्सुपियल्स इवॉल्व्ड इन द, तो देखो भाई इसका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो गया। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस। डार्विन का मतलब ही सेक्स है। द आइडिया नॉट रिलेटेड टू डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जी हाँ है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है। इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये उसमें था लामार्कियन थ्योरी में। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये है डार्विनियन थ्योरी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है डार्विनियन थ्योरी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी डार्विनियन थ्योरी है। Lamar gave the example of dash to explain his theory, जिराफ। ठीक है आगे बढ़। मैकेनिज्म ऑफ, अच्छा ये बस खत्म, फिर अपना एक्सरसाइज है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। अच्छा मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कौन एक्सप्लेन करता है? ब्रांचिंग डिसेंट नहीं करता। ब्रांचिंग डिसेंट क्या करता है? कॉमन हिस्ट्री और ब्रांचिंग डिसेंट पैटर्न करता है ब्रांचिंग डिसेंट। और अपना मैकेनिज्म ऑफ कौन करता है इवोल्यूशन? साइको नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है लिख ही लो। अब थोड़ा सा ही है, फिर क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा और है, फिर तो प्लांट है, प्लांट और ह्यूमन है फिर, है ना? क्या है फिर ह्यूमन और प्लांट है हल्का सा, नहीं फिर हार्डी विनबर्ग है, और हाँ हार्डी विनगर के बाद प्लांट और ह्यूमन है। हार्डी विनबर्ग का थोड़ा सा बस, पूरा वही है। और उसके बाद, हाँ उसके बाद प्लांट्स और ह्यूमन है। चलो तो थोड़ा देर और है, अभी क्वेश्चन करेंगे, फिर हार्डी विनबर्ग तो तुरंत हो जाएगा, बस उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट ज़्यादा मेन लिखेंगे, फिर उसके बाद चलें आगे। खैर स्पेशिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय न्यू स्पीशीज अराइज व्हेन a species arise evolution is said to occur. Now what is the cause or mechanism of origin of new species? Even though Mendel had talked on it, Darwin is not the origin kept according to Darwin are the cause as they keep accumulating from one generation to another and ultimately give rise to new species. But Hugo de Vries had different views. Hugo de Vries conducted with his study on evening primrose plant in the first decade of the 12th century and talked about mutation. Hugo de Vries conducted his studies on the evening primrose plant in the first decade of the 20th century and talked about mutations. According to him, mutations were the cause of evolution and not the minor variation that Darwin talked about. Mutations are large changes suddenly in the genetic sequence, that is DNA, RNA sequence. These mutations arise suddenly in a population, and those mutations which occur in a germ cell of another are passed on to another generation. Mutations are random and directionless. अभी तक जो भी हुआ सारे लिख चुके हो तुम, कोई नया चीज़ नहीं बोला अभी तक। ठीक है 1901 इंपॉर्टेंट ईयर है ह्यूगो डे व्रीज वाला। Differences between variation and mutation. All the variation and mutation both point towards association, but there are some differences which them can be summarized as the Darwinian factors are small, which implies that they cannot bring about certain change in the life forms, and they cannot bring only when they accumulate. According to Hugo de Vries, mutations are large and they bring about certain change in the span of a single generation. Mutation do not innovation. हाँ ये बोला था, म्यूटेशन का एक्यूमुलेशन करना जरूरत नहीं, मतलब जनरेशन बाय जनरेशन जरूरत नहीं है म्यूटेशन, म्यूटेशन एक बार में बदल देगा, जो कि ह्यूगो डे व्रीज का कहना है। हालांकि जीन अलग ही लेवल चीज़ है वेरिएशन का,
डार्विन के हिसाब से मतलब बहुत जनरेशन लगता है. वेरिएशन और डायरेक्शन, वेरस म्यूटेशन are random and directionless. Darwin said that evolution is slow and gradual all the time, but he always believed that evolution is only sudden. The single step large mutation can cause precision and named saltation by De Vries. ठीक है, ये खत्म हो गया. अब खत्म. म्यूटेशन ऑल्सो कॉल्ड एज साल्टेशन बाय De Vries. साल्टेशन कौन बोला? तो ह्यूगो De Vries बोला साल्टेशन. अब चलो एक्सरसाइज. प्लेसेंटल वाला होता है एग्जिबिट, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. भाई दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ना, दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. हाँ, दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है दोनों भाई, दोनों कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आंसर भी वही है. वैरायटी ऑफ बिग्स ऑफ लिंचेस दैट डार्विन फाउंड एज एन एग्जांपल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन. फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. व्हिच वन इज सही? ह्यूगो डे व्रीज नेचुरल सिलेक्शन. भैया गलत. डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. तो देखो भाई, डार्विन थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दिया है, बिल्कुल सही. पैस्चर कंटिन्यूटी ऑफ नहीं, पैस्चर तो बस वो दिया था कि अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लोग ऑर्गेनिक मैटर वाला, तो पैस्चर वो दिया. मेंडल इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर महाबुक का लमार्क जी दिए हैं. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय लमार्क. तो ऑप्शन नंबर 2 कौन सा सही है? डार्विन की थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. मतलब हर एक ऑर्गन अपना अपना सेल बनाएगा और वो ब्लड के थ्रू जर्म में आएगा और फिर ऐसे बनेगा. बहुत फालतू. खैर, जब ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सेलेक्ट करिए. Darwinian variations are small and directionless. Darwinian theories are small and directionless. Directionless. Darwinian variations are small and directionless. True. पहला ही सही है. Darwinian variations are small and directionless. नहीं, variation are directional. वेरिएशन और डायरेक्शनल गलत है. पहला गलत है. म्यूटेशन और रैंडम एंड डायरेक्शनल नहीं, सेकंड भी गलत है. फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by the nature. हाँ, थर्ड सही है. All mammals except whales can have cervical. नहीं, मेरे को लग रहा है थर्ड सही है. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. चलो इस लाइन को देख लेते एक बार सही है कि नहीं. पहले कंट्रोल एक सेकंड जस्ट. फिट ये क्या है? 35 है. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 35. लेट्स सी आंसर क्या है. क्वेश्चन 35 का थर्ड आंसर, मतलब थर्ड करेक्ट है. हाँ सही है, तो अपना आंसर सही है. ठीक है भाई, थर्ड ये है ऑप्शन. ऑल फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर. ये भी लिख ही लो इस लाइन को. फिटनेस इज द एंड रिजल्ट. Fitness is the end result of the ability to get selected by nature. The two key concepts of Darwinian theory of evolution are ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. ब्रांचिंग डिसेंट क्या देता है? इवोल्यूशन का कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है. ब्रांचिंग एंसेस्ट्री. ब्रांचिंग डिसेंट क्या बताता है इवोल्यूशन के बारे में? ब्रांचिंग डिसेंट बताता है पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन. और नेचुरल सिलेक्शन बताता है, क्या बताता है? नेचुरल सिलेक्शन क्या बताता है? मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, तो बोथ 2 and 3 आंसर. In modern synthetic theory, the unit of evolution is obviously population. Neo-Darwinism believes that new species develop through mutation with natural selection. Option number 1. हाँ, ये important है. Neo-Darwinism believes that new species develop through mutation with natural selection. ये question 38 important है. Which is not the concept of Lamarckism. Rate and survival of organisms are due to variations. Rate and survival of organisms are due to variations. पहला तो not a considered. हाँ, पहला ही environmental pressure produces variation. An organ is constituted will grow in size. Inheritance of acquired characters. तो थर्ड और फोर्थ तो सही है लामार्किज्म के हिसाब से. Rate and survival of organism are different due to variation. रेट एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गन. रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या बात हुआ? रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हुआ?
Rate of survival of organism. Environmental pressure produces variation. आई फील उसका कौन सा नहीं है कंसेप्ट, तो वन होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर प्रोड्यूसर्स वेरिएशन, तो हाँ ये सही है, तो 2 3 4 सही है। 2 3 2 2 3 4 सही है, वन गलत है लामार्किज्म के हिसाब से। अगस्त वेजमैन का थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म रिजेक्टेड बोथ, क्या क्या, डार्विन थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस और लामार्कियन थ्योरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो अडैप्टिव रेडिएशन बेस्ड ऑन द लोकोमोशन। Adaptive radiation based on the locomotion. Adaptive radiation. Scorpion, elephant, human. चीता, कंगारू, मोल। अच्छा, एडेप्टिव रेडिएशन मतलब एक ही था, वो अलग अलग जगह गया और अलग अलग चीज़ हो गया। तो स्कॉर्पियन, एलिफेंट, ह्यूमन तो नहीं लग रहा है, पता नहीं यार, पाइथन नहीं पता, कॉकरोच, स्क्विरल, टोड ना, लगता तो नहीं है, हाँ सेकंड लग रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों मैमल्स हैं। चीता, कैंगरू, मोल तीनों अलग अलग जगह जाके अलग अलग अपने निच पे रह के अडेप्टिव रेडिएशन से बेस्ड ऑन लोकोमोशन, तो हाँ सेकंड होगा 41 को। आगे देखो, अब हार्डी वेन पर 3 पेज होगा, 1 2 3 और फिर क्वेश्चन। 3 पेज है, फिर क्वेश्चन है, फिर आएगा अपना प्लांट और ह्यूमन। प्लांट पे थोड़ा 2 पेज है, फिर थोड़ा घास फूस और फिर मतलब वही, फिर मैन है, मैन ख़त्म, फिर चैप्टर ख़त्म। प्लांट, मैन और बस हार्डी वेन पर यही बच रहा है। चलो चलो लेट्स गो। Hardy-Weinberg principle, it was proposed by G. H. Hardy. Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle मेरा मतलब Hardy-Weinberg principle proposed by एक सेकंड proposed by G. H. Hardy and W. Weinberg in 1908. This has stated genetic equilibrium, मतलब बस वर्ड लिख दो, टर्म लिख दो 1908, फिर लिखो जेनेटिक इक्विलिब्रियम, बस इतना लिख दो और कुछ नहीं। Genetic equilibrium is the frequency of occurrence of alleles in a gene is supposed to remain fixed and even remain same through the generations. Hardy-Weinberg principle stated that it using algebraic equations. Main concept of the principle are the principle says that allele frequencies in a population are stable and is constant for generation to generation. The gene pool, that is total genes and other alleles in a population, remains constant. This is called a genetic equilibrium. Sum total of all, हाँ ये लिखो, थर्ड पॉइंट लिख दो, sum total of all allelic frequency, genetic frequency नहीं है, allelic frequency है, ध्यान से, allelic frequency is 1. Sum of all allelic frequency is 1. The term allele is employed for any of the two forms of a gene present on the same locus in the two homologous chromosomes, and allelic frequency is the frequency with which a particular allele occurs in a population. For example, in a population of diploid organisms, a gene has two alleles, A and A. Suppose the frequency of occurrence of allele A is P and of A is Q. Then what is the probability that the allele A will appear on both the chromosomes of a diploid individual? It will simply the product of its probability, that is P into P equals to P square. मतलब probability of that allele will appear on the chromosome of individual will simply be P square. Hence we can say that the frequency of A individuals in the population will be P square. Similarly, the frequency of chota individuals in this population is Q square, and the heterozygous is 2pq.
We can say that probability of occurrence of hybrid condition is twice of than the probability of genotype AA or AA having P square Q square frequency. Hardware state that the sum total of all allelic frequency is 1 and possible frequencies of the above genotype, that is acha possible frequency. Yes, so mathematically the schedule we can see that this equation is a Boyer expansion of the equation. Why can we whether the population is inaccurate in the population or not. Disturbance in the genetic environment, that is change in the frequency of allele in a population, would be interpreted as a resulting equation. तो लिख दो change in frequency of alleles, change in frequency of alleles in a population, ये सब term ध्यान से, in a population would be interpreted with interpreted as resulting in evolution, when frequency measured differs from expected values. The difference indicates the extent of evolutionary change. Factors affecting Hardy-Weinberg principle. Following 5 factors are known to affect Hardy-Weinberg principle equilibrium. Therefore, if any of the following phenomena occurs, change in frequency of alleles take place that may result in the evolution. Genetic migration or genetic flow, genetic drift. अच्छा हाँ, अगला पे मतलब लिखो अगला हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है. सबसे पहले नंबर 1 जेनेटिक माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. जेनेटिक ड्रिफ्ट. थर्ड पे म्यूटेशन. फोर्थ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. फिफ्थ पे नेचुरल सिलेक्शन. जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन. Migration defined in the genetic terms as the movement of individual from one population to another can be a powerful force in upsetting to genetic stability of another person. The phenomenon of movement of alleles from one population to another is called gene migration. It can either occur by migration of specific section of population from one another area or by interbreeding between members of two populations, resulting in interchange of alleles. If the characteristics of newly arrived animals are different from those who already there, the genetic composition receiving population may be altered. If newly arrived individuals can adapt to survive in the new area and mate successfully. Okay. जीन पूल. हाँ ये सारा लिख दो. ये जो अपना वो है जीन माइग्रेशन डालो पहले हेडिंग. जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो. जीन इधर से उधर गया. तो इसमें भी दो तरीके से हो सकता है. पहला कि माइग्रेट कर गया टू न्यू सेपरेट प्लेस. एंड फॉर्म कॉलोनी देयर. और दूसरा interbreeding between member of two population. बस इतना ही लिख दो, समझ जाओगे. बहुत इंटेलिजेंट हो. अब लिखो जीन पूल. जीन पूल लिख लिया. A total collection of all genes and its allele in a population is called gene pool. Total collection
of all genes and its allele in a population is called as gene pool. Thus, gene pool will have all genotypes, that is, genes of organism. Gene flow. Gene pool हो गया gene flow. If genes are exchanged at multiple occasions to and fro, genes are exchanged multiple occasions to and fro between two different populations of a species, resulting in homogeneous population. It is gene flow. Gene flow. Genes are exchanged multiple occasions to and fro between two different populations of a species, resulting in homogeneous population. It is gene flow. Genetic drift या फिर Save-all right effect, non-directional factor. Natural selection is not only the force responsible to bring about change in gene frequency. Not the only force responsible to bring about changes in gene frequencies. Natural selection is not the only force responsible to bring about changes in gene frequency. अच्छा ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट लिख लो यार. जीन माइग्रेशन हो गया, अब आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट. या फिर सेवॉल राइट इफेक्ट, या फिर नॉन डायरेक्शनल फैक्टर. सेवॉल राइट इफेक्ट, नॉन डायरेक्शनल फैक्टर या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट. सेवॉल राइट इफेक्ट, नॉन डायरेक्शनल फैक्टर या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट. Natural selection is not the only force responsible to bring about changes in gene frequency. This is the role of chance or drift, genetic drift also. Genetic drift occurs causes a change in the gene frequency by chance in a small population. In small populations, individuals alleles of a gene are represented by a few individuals in a population. These alleles will be lost if the individuals fail to reproduce. Allele frequencies appear to change randomly as if the frequency were drifting. Thus, a random loss of alleles in a small population is genetic drift. बस इतना लिख दो. Random, a random loss of alleles in a small population. इतना लिख दो, बहुत है. पूरा पैराग्राफ काम का नहीं है उतना. A series of small populations that are isolated from one another may come to differ strongly as a result of genetic drift. Genetic has two ramifications as described below: bottleneck और founder effect. तो ये लिखना जरूरी है. नंबर ए bottleneck. ठीक है. It is the decrease in the genetic variability in population. Example, cheetah population in Africa decreased due to hunting. Their decreased number have limited cheetah variability with serious consequences. The present cheetah population is susceptible to a number of fatal diseases. If any of these diseases attacks the cheetah population, the path of extinction of cheetah cannot be reversed. कह रहा है कि जैसे बॉटल नेक इफेक्ट कहने का मतलब कि इन लोग का नंबर ही इतना घट गया कि कुछ में जिसमें अलील बहुत ज़रूरी था वो सब मर गया.
तो बॉटल का नेक तक पहुंच गया है, ऊपर रखो बॉटल तो वो धीरे धीरे कम गया. Or the present cheetah population is susceptible to a number of fatal diseases. So if any of these diseases attacks the cheetah population, the path of extinction of cheetah cannot be reversed. मतलब ख़त्म हो जाएगा, एकदम मर जाएगा, क्योंकि अलील ही नहीं बचा काम वाला. सारा जो मेन मजा वाला इलील था, अच्छा वो वाला रखने वाला सब चीता मार दिया गया, और जब बचा सब बहुत चीता है. ठीक है, तो लिखो इसको ऐसे. कैसे लिखा यार इसको, समझो. तो ऐसे लिख सकते हैं, चीता पॉपुलेशन इन अफ्रीका. पहले तो ये लिख दो, चीता पॉपुलेशन इन अफ्रीका, एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख दो. एज एन एग्जांपल इतना लिख दो. फिर लिखो द प्रेजेंट चीता पॉपुलेशन, द प्रेजेंट चीता पॉपुलेशन is susceptible to a number of fatal disease. This is because cheetahs with good alleles with better alleles या good alleles were killed. ठीक है, अब लिखो दूसरा, फाउंडर्स इफेक्ट. फाउंडर्स इफेक्ट जेनेटिक माइग्रेशन ही है. ठीक है, जीन ही चला गया कहीं पर. ठीक है, फाउंडर्स इफेक्ट. देखो, when one or few individuals are dispersed and become the founders of a new isolated population at some distance from their place of origin, then the alleles they can carry are of special significance. Even if these alleles are rare in source of population, they will be significant factoration for of the new population's genetic endowment. ठीक है, this effect where rare alleles and combination of alleles may be enhanced in a population is called founders effect. The founders effect is particularly important in evolution of organism islands such as Galapagos, which Darwin visited. Most of the kinds of organisms that occur in such areas were probably derived from one or a few initial founders. ये भी important है. इसको ऐसे लिखो, one or few individual separate from a population and form new colony at some distance. ठीक है, and are called as founder of the new colony. अभी एक और लाइन लिखो कि these founders genes have a special significance. These founders genes have a special significance on the new population. ठीक है, new populations apostrophe s, population के बाद new populations genetic endowment. ठीक है, फाउंडर्स इफेक्ट भी हो गया भाई. तो ये बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट हो गया. फिक्सेशन ऑफ न्यू म्यूटेशंस. जेनेटिक ड्रिफ्ट फिक्सेस न्यू alleles genes that arise by mutation from time to time to and eliminate the original gene, thereby changing the genetic makeup of small population. Genetic drift fixes new alleles and genes that arise by mutation from time to time to and eliminate the original gene, thereby changing the genetic makeup of small population. Fixation of genetic drift fixes new alleles, genes that arise by mutation from time to time and eliminate the original gene, thereby changing the genetic makeup of small population. New allele gene by mutation. अच्छा, देख लो इसको.
फिक्सेशन ऑफ, ये फाउंडर्स इफेक्ट में ही आएगा ये चीज़, फिक्सेशन ऑफ न्यू म्यूटेशंस, और फिर एरो देख लिखो, ये फाउंडर्स इफेक्ट यहीं नीचे आएगा, मतलब हेडिंग है, ठीक है। इसमें लिख दो जेनेट, पूरा ही लिख दो, उसको चिप दो, genetic drift fixes new alleles, genes that arise by mutation from time to time and eliminate the original gene, thereby changing the genetic makeup of small population. Mutations are random with respect to adaptive needs of organisms. Most mutations are harmful or with no effect on the bearer. Mutation rates are very slow. नंबर पे जेनेटिक माइग्रेशन, जेनेटिक जीन फ्लो था, जीन माइग्रेशन था, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट था, अब आ गया म्यूटेशन। म्यूटेशंस रैंडम, इनडिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं होता, इनडिस्क्रिमिनेट होता है, ठीक है, ये भी लिख लो, इनडिस्क्रिमिनेट। With respect to adaptive needs of organisms, most organisms are harmful with no effect. Harmful or neutral, mostly harmful or neutral. On the bearer, mutation rates are very slow. Mutation rates are very slow. Mutation rate, mutation होने का rate are very slow. Very slow. ठीक है। Replica plate experiment of Lederberg and Lederberg proved that mutations are pre-existing and pre-adaptive in nature. हाँ, ये important है, ये इसको अलग ही रंग से लिख दो म्यूटेशन के अंदर। Replica plate experiment of Lederberg and Lederberg. Replica plate EXPT of Lederberg and Lederberg proved mutations are pre-existing. Proved mutations are pre-existing and pre-adaptive. Pre-existing and pre-adaptive in nature, ठीक है। Pre-existing and pre-adaptive in nature. Genetic recombination during gamete or sperm or worm formation, the alleles present on the parental chromosomes separate and form new combination. This results in genetic recombination. The crossing over during meiosis is a major source of variation in a population. नंबर 4 पे आ गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। During gamete formation, alleles present on parental chromosome separate and form new combinations. Alleles present on parental chromosome separate and form new combination. This result in genetic recombination. The crossing over during meiosis is a major source of variation in a population. क्रॉसिंग, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
crossing over during meiosis. Crossing over during meiosis is a major source of variations in a population. The offset bodies from this organ show new combination of characters and are called recombinants. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में रिकॉम्बिनेंट बनता है, ठीक है. ऑप्शन बॉडीज हाँ ठीक. नेचुरल सिलेक्शन नंबर 5 पे. नेचर सेलेक्ट स्टेबलाइजिंग डायरेक्शन डिसरप्टिव नेचर. हाँ ये इंपॉर्टेंट है. नेचुरल सिलेक्शन ये इंपॉर्टेंट है. स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है और क्या क्या है, डायरेक्शनल है और फिर डिसरप्टिव है. स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव. फॉलो बैलेंसिंग सिलेक्शन. चलो बस थोड़ा सा. Stabilizing selection if the nature follows those individuals in which if nature follows those individuals in the population which possess the mean character value, then it is said that. अच्छा ठीक है, मीन कैरेक्टर वैल्यू बस आप इतना लिख दो. अब एग्जांपल में लिखो चुपचाप ह्यूमन हाइट. इतना भी नहीं छपना है. मीडियम साइज इंडिविजुअल्स इफ नेचर फॉलोज मतलब विच पोसेस मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है. द पीक ऑफ बेल शेप्ड कर्व गेट हायर एंड नोरोवर एज इट ट्राइज टू डिक्रीज द पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यूज. हाँ सही है. सिकल सेल is an example of balancing selection. Balancing selection. ठीक है. तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है. स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव. स्टेबलाइजिंग का ग्राफ नैरो और पीक का एकदम चिवीला सा है. डायरेक्शनल का ग्राफ एक तरफ टेढ़ा है और फिर अपना डिसरप्टिव में 2 बार टूटा हुआ है. इन फ्यू RBCs सिकल सेल एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग सिलेक्शन, ठीक है. In few RBCs, 1 to 2% become sickle cell shaped during the lack of oxygen. The heterozygote has BHBS who have one copy of sickle cell allele, coupled with one normal allele, are better survivors in the areas where malaria is endemic, because malarial parasites spends a part of the life cycle in the RBC. So, one that becomes sickle cell during lack of, they will die. तो मतलब सिकल सेल एनीमिया बचा लेता है मच्छर से. If women who are heterozygote have higher fertility, that's why the natural selection has not eliminated the allele. Women who are heterozygote have higher fertility, that is why natural selection has not eliminated the allele. Heterozygote have higher fertility, that is why. ओह, जब वुमेन हेट्रोजाइगोट होती है ना, उनकी फर्टिलिटी हाई होती है और इसी कारण नेचुरल सिलेक्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है, एलिमिनेट नहीं किया, ठीक है. द लॉस ऑफ डेलेटेरियस रिसेसिव जीन्स थ्रू डेथ ऑफ होमोजाइगोट्स HBS is being balanced by the gain resulting from successful reproduction by heterozygotes in malaria prone areas. For this reason, the evolution is called balancing reaction. ठीक है. Heterozygotes enjoy the same resistance to malaria, so they survive the malaria parasite more either normal और sickle cell homozygotes. तो heterozygote जो होता है वुमन, उसके पास हाई फर्टिलिटी होती है और उसी के कारण वो नेचुरल सिलेक्शन एलील को एलिमिनेट नहीं कर पाया. अच्छा हाँ,
वैसे भी अलील एलिमिनेट नहीं होता कम्प्लीटली। मौत वाले में लाइन लिखे थे हम लोग कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण कोई अलील पूरी ही नहीं मर जाता। ठीक है, heterozygotes enjoy some resistance to malaria, so they survive the malaria parasite more successfully than either normal or sickle cell homozygotes। 1 to 2% आरबीसी सिकल सेल हो जाता है फीमेल हेटेरोजाइगोट्स के कारण, वो उसका नहीं अभी तक नहीं गया है। और वो जो होमोजाइगोस होता है वो बैलेंस बाय गेन सेल्फ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन बाय हेटेरोजाइगोट्स इन मलेरिया प्रोन एरिया, सिलेक्शन इज कैर्ड बाय बैलेंसिंग सिलेक्शन, और ये बैलेंसिंग सिलेक्शन टाइप है। अच्छा, डायरेक्शनल सिलेक्शन मतलब टॉल डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, एक को ही सपोर्ट करेगा। डायरेक्शनल मतलब एक को ही सपोर्ट करेगा। डायरेक्शनल सिलेक्शन either tall or dwarf, either tall और dwarf लिख दो बस, either tall और dwarf, और ग्राफ बना दो इसका एक तरफ तिरछा करके ऐसे और फिर इस तरह का। ठीक है, अब लिखो नंबर सी, डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में लिख दो 2 पिक्स में बना है, ऐसे ऐसे 2 ढोला बना दो, बस खत्म हो। Enumerate any 3 factors from affecting Hardy-Weinberg equilibrium: genetic drift, genetic migration, mutation, और भी है 2 ठो। कौन 2 ठो? जेनेटिक ड्रिफ्ट है सेकंड नंबर पे, जेनेटिक माइग्रेशन पहला है, म्यूटेशन भी तीसरा है, चौथा नंबर पे है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा नंबर पे है नेचुरल सिलेक्शन। कैन नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन? नॉन हेरिटेबल नहीं है वो वाला वेरिएशन लीड टू इवोल्यूशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, तो हो गया लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स इन ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक सेकंड सोचना पड़ेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर्स इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। तो मेरे हिसाब से स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होना चाहिए, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होगा शायद। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 का फर्स्ट है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन ही है, सही है, हाँ अपना सही है। चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड। जीन पूल इज जीनोटाइप पॉपुलेशन, सेकंड आंसर। if the natural selects both the peripheral disruptive salutation और single step large variation salutation यानी म्यूटेशन। ठीक है, योगर्ट एवरेज 1901। Generative random change in gene frequency has nothing to do with is appearance of recessive genes. Generative drift is produces greatest fluctuation in large population. Is random change in gene frequency has nothing in common with inbreeding. Is appearance of recessive genes produces greatest fluctuation in large population. Random change in gene frequency. Random change in gene frequency. Genetic drift is random change, nothing wrong with inbreeding. Appearance with produces, हाँ fourth, produces greatest fluctuation in gene population. फोर्थ होगा भाई, जीन पूल पॉपुलेशन टेंड्स टू रिमेन स्टेबल विद एवोल्यूशन आगे दो से म्यूटेशन विदाउट एवोल्यूशन एंड मीटिंग रैंडम मीटिंग, हाँ फन होगा। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एज फाउंड इन द पेपर्ड मॉथ प्रूव्स दैट melanic forms has no selective advantage in industrial area. Lighter form industrial melanism as found in pepper moth has produced that. हाँ फर्स्ट होगा, melanic form has no selective advantage in industrial area, फर्स्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर्स, which are the following सेवाल राइट इफेक्ट? जेनेटिक ड्रिफ्ट था ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट को कहते हैं सेवाल राइट इफेक्ट, है ना। सेवाल राइट या फिर नॉन डायरेक्शनल फैक्टर या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट ही है। ठीक है, लेटर वर रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन दैट म्यूटेशंस आर प्री एडेप्टिव एंड एक और चीज़ है प्री एडेप्टिव एंड प्री डिटरमाइंड। प्री एडेप्टिव एंड
pre adaptive, later bug and later bug, replica, played in experiment. If nature selects mean character value, it is मतलब बीच वाला अपना चुन रहा है तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, ठीक है। और डायरेक्शनल मतलब टॉल या शॉर्ट में से किसी एक को, डायरेक्शनल मतलब खिस गया और वो टॉल या शॉर्ट किसी एक को, डिसरप्टिव मतलब दो जगह टूट गया, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन सही है अपना। अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल, सम टोटल ऑफ ऑल द एलेलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1, allelic frequency is 1. Sum of all allelic frequencies is 1. Now Hardy-Weinberg principle is applicable to large population obviously. Which of the following is considered as population indicator? Frequency of marine moth, predator, frequency of light colored moth, pollution indicator. Lichen है भाई, lichen. Considered as pollution indicator, lichen है. Industrial mechanism in moth provides an example of disruptive selection, balancing selection, stabilization, and direction. Industrial mechanism in moth provides example of. Industrial mechanism in moth provides example of balancing selection, disruptive selection, direction selection. Industrial mechanism in moth provide of इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बहुत बड़ा एग्जांपल है। बैलेंसिंग, एक सेकेंड, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट मतलब एक को सपोर्ट किया ना, तो ये हो गया डायरेक्शनल, नहीं डायरेक्शनल एक को सपोर्ट किया ना, एक डायरेक्शन में चला गया ये सिलेक्शन, तो डायरेक्शनल। स्टेबलाइजिंग मतलब दोनों का बीच का, और बैलेंसिंग मतलब भी वही हो गया अलग अलग। डिसरप्टिव मतलब दो बराबर, तो ऑप्शन नंबर 4 इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म बात। फ्लिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स रिप्रेजेंट अ केस ऑफ फ्लिंचेस ऑन केस ऑफ फाउंडर्स इफेक्ट केस ऑफ फाउंडर्स इफेक्ट। अब आ गया प्लांट, थोड़ा सा एनिमल, हल्का सा एक पेज है, और फिर आ गया ह्यूमन। प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इसको एक वीडियो में करूँगा, थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब थका तो नहीं हूँ बट थोड़ी देर में, अगले वीडियो में शायद।